It is the eve of the 70th anniversary of the Lahore Resolution. Thousands of citizens from across Pakistan are gathering in Lahore for an Aman Itehad People's Assembly. Tonight, they will celebrate that historic event which led to the creation of Pakistan. And they will also define future directions. They will adopt a People's Resolution mapping pathways to a peaceful and strong Pakistan. अमन इस मुल्क में सिर्फ उस वक्त आएगा जब इस मुल्क के सियासी और जमहूरी इदारे वो काम करना शुरू कर दें जिससे आम आदमी के जिंदगी में फर्क पड़े। ये रियासत लोगों के लिए बनाई गई है। कौमी सलामती उस वक्त आती है जब हर शख्स फख्र से अपना सर बुलंद कर सके। उस वक्त जो है कौमी सलामती आती है जब लोगों को रोजगार मैसर हो। और ये काम मुश्किल काम जरूर है, लेकिन आप सोच लें कि 1940 में जब लोग इकट्ठे हुए थे, क्या उनका ख्याल था कि 7 साल बाद हमें पाकिस्तान मिलेगा? तो आज जब हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, शायद ये मंजिल आपको मुश्किल लगे, लेकिन लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन कि जिसका वादा है। दाना पताना दाना ना वो दोती लगाने नाना ना वो दोती लगाने नाना ना अब आजा तो पक्का ने नाना ना वो आजा तो पक्का ने मामा ना वो जी साकना ऐसे को मारा जातना वो जी मंदरी पर ईद हवा खंदो अंदरी वो जी सुमरो कपफाज खुदा से सो। 23 मार्च 1940 एक करारदाद पास हुई थी जिसमें यह अहद किया गया कि एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत कायम की जाएगी। आज उस करारदाद को पास हुए 70 साल हो गए हैं, लेकिन आज ये अहद अभी भी अधूरा है। वो जो ख्वाब था, वो जो विजन था, वो कहाँ गया? हम आज उसकी यकीन दहानी करना चाहते हैं। आज दरअसल हम ये चाहते हैं कि एक अवामी करारदाद पेश की जाए कि हमें इस तरह का पाकिस्तान चाहिए। इस मुल्क में कोई आईनी मंसूबा उस वक्त तक ना तो काबिले अमल होगा और ना ही लोगों को कबूल होगा जब तक सूबे खुद मुख्तार नहीं होंगे। रियासत का फ़र्ज़ है कि कानून और इंसाफ की ऐसी अमलदारी कायम करे कि हर शख्स ख़ुसूसन मुक़्तदर तबका अपने अमल और बेअमली के लिए जवाबदेह हो। ये असम्बली मज़ीद करार देती है कि शहरियों के दरमियान और रियासत और शहरियों के दरमियान एक नया उमरानी मायदा तरतीब दिया जाए। क्या आप तमाम ख़वातीन और हज़रात को आज की ये तारीखी करारदाद मंजूर है? मुबारक हो आपको। The People's Resolution calls for shifting from a security state to a social welfare state. It advocates stronger democracy in Pakistan, provincial autonomy, and a foreign policy based on trade and mutual non-interference. It demands that the state prioritize healthcare, livelihood, and education. It calls for equality of all citizens, for justice, and for the rule of law. The People's Resolution is essentially a citizen's call for action to change the stark realities of inequality, extremism, and insecurity marking present-day Pakistan. The People's Resolution was adopted through the efforts of Aman Itehad. Advocating peace and a life of dignity, Aman Itehad is a broad-based citizen coalition striving to build a nation that cares for its citizens. हर शहरी को सेहत फराहम करे, तालीम फराहम करे, रोजगार फराहम करे। अब मैंने अपनी आंखों से पाकिस्तान का हशर देख रही हूँ कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। United under Aman Itehad, concerned citizens across Pakistan are raising their voices against injustice and violence and mobilizing public action through corner meetings, people's assemblies, and public rallies.
जब भी हमारे बच्चे बाहर जाते हैं हमें टेंशन होती है कि कभी वो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। Aman Itehad has also designated the 1st of January as a day to express solidarity with victims of violence and injustices. It mobilizes citizens across the country to take to the streets to express their commitment to peace and show solidarity with those affected by violence. इस वक्त किसी दी भी जानो माल कोई चीज़ भी महफूज नहीं हैगी, किसी दा ज़हनी सुकून जिहड़ा किसी नूं ज़हनी सुकून नहीं हैगा। अमन की खातिर निकले हैं, हमारे साथ चलो। ਜਿਹੜੀ हुकूमत भी आई है हर वादे करके साडे जोर ना साडी ताकत ना हुकूमत आई है और ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰਾ। Just before Solidarity Day in Karachi, there was a suicide attack on the Ashura procession where a lot of people were killed. And there was actually a very strong feeling that we do need to do something and come out against all of this that is happening. जिस तरीके से खामोश तमाशाई बने बैठे रहे पुलिस वाले और रेंजर्स, दुकानें लुटती रहें, जलते रहे, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। एक सॉलिडारिटी है उन लोगों के लिए जिनके प्यारे वहाँ पे मून मार्केट में कराची में जिनका नुकसान हुआ, जो शहीद हुए, जो पख्तूनख्वा में हैं, जो फाटा में हैं, जो कि पिस रहे हैं या तालिबान के खातिर या मिलिट्री ऑपरेशन से, वो भी इंसान हैं, हम उनके साथ हैं। हम समझते हैं हर जिंदगी हर जान बहुत कीमती होती है। The response was absolutely unbelievable that from 5 places we grew to 51 or 52 places where people came out at the same time with the same message. दहशतगर्दी के खिलाफ कराची में सिविल सोसाइटी की जानिब से पुरअमन मुजाहरा किया गया। सखर में मुख्तलिफ फलाही तंजीमों की जानिब से क़याम अमन के लिए रैली निकाली गई। जैकबाबाद में अमन रैली फैमिली लाइन से शुरू होकर प्रेस क्लब पर खत्म। बहावलपुर में मॉडल टाउन सी चौक से चौक सराइकी तक अमन रैली निकाली गई। पेशावर में दहशतगर्दी के खिलाफ अमन रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने अमन की बहाली के हक में नारे लगाए। डेरा गाजी खान में दहशतगर्दी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। कबायली इलाके पाराचनार में शहरियों ने अमन वॉक की। अमन हमारे इलाके में हुकूमत के अलावा आम लोगों की वजह से भी आ सकता है, सिर्फ हुकूमत इसमें काम नहीं कर सकती। Thousands of ordinary men, women and children rally for the rule of law and justice and a suspension of hostilities in a country consumed by militancy and insecurity. People brought their children, there were women in these rallies. At times one felt that here is the citizen resolve, that we will prevail, we will overcome the situation and we will ensure that peace comes to Pakistan. An increase in violent extremism and insecurity over the past decade, added to a pervasive lack of accountability, injustice and lawlessness, has been threatening not only the lives of Pakistan's citizens, but also the very existence of the state itself. Aman Itehad was formed in response to the growing public concern over the escalating costs of militancy and the imperative for peace. अमन इससे नहीं आता कि आप जो हैं जहाज खरीदें, बम फाड़ें। अमन उस वक्त आता है जब आपके मुल्क की आवाम खुशहाल हो और उसको तहफ़्फ़ुज़ मिले, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं। बात यह है कि ये पूछेंगे भी नहीं जब तक आप लोग मिलके इस मुल्क की भागदौड़ अपने हाथों में नहीं संभालते और इनको समझाते नहीं कि हालत जो है इस मुल्क की बदलेगी तो इस मुल्क की आवाम बदलेगी। Since 2009, a group of dedicated lawyers, journalists, human rights and political activists, trade unionists, business leaders, academics and artists decided that citizens could no longer afford to be silent bystanders. These committed citizens assembled to discuss how to address the challenges facing the nation and to chalk out pathways to peace. It started with an article that Ali wrote. He wrote about the fact that the situation in terms of insecurity, violent extremism in Pakistan required citizens to get involved in looking for solutions. I think there were a lot of people that were trying to do something about it on their own, but I think one felt that there was need for a collective effort. हम एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं, अमन इत्तेहाद इज़ अ प्लेटफॉर्म, तो इसको हम इस्तेमाल किस तरह करें कि एक प्रोग्रेसिव पॉजिटिव डिस्कोर्स शुरू हो। अगर हम कम्युनिटी में काम करें तो कम्युनिटी लेवल पे, अगर हम टीचर हैं तो टीचर लेवल पे, जहाँ पर भी हैं
या हमें मीडिया में अपॉर्चुनिटी मिलती है एक डिस्कोर्स टू चैलेंज व्हाट इज बीइंग इम्पोज्ड एज द डोमिनेंट वे ऑफ थिंकिंग. It could be a platform for like-minded people to raise their voice. It can strengthen the civil society voices. Aman Itehad is taking a larger agenda of the peace. They are not talking about the issue of a particular area. Aman Itehad is talking about the whole issue of peace in Balochistan. Same in Hazara or in a other part of the Pakhtunkhwa and in Sindh. It was a very wide slate in a sense, because we said, what does peace really mean? It can mean different things for different people, and at the end of the day, we did come out with 4 pillars. Democratic governance, justice, rule of law, and a life of dignity were themes that were identified as essential to enduring peace. These themes eventually formed the basis of the People's Resolution. A social welfare state is that the state feels that it is responsible for providing people these basic social services. And if the state is responsible, it cannot roll back or withdraw from those services. At the moment, this is what is happening. The state sees its responsibility as securing its frontiers only. And the strategies it uses to secure that frontier puts everything else on stake. So people's livelihoods, their needs are all put at on the back burner. मुल्ला काजी विच बिठा के भटकाने की खाते लेकिन रब तो मेरा भी है उसकी मैं पहचान मांगू सिर्फ एक वो रियासत जिसमें हो फिक्रे इंसान. The idea was that from here that we should go out to various provinces and hold similar meetings and get feedback from people what they feel that we should do. This way we can actually reach out to many more people and get their views on board and then hopefully build a movement for peace in Pakistan. Aman Itehad involved thousands of ordinary citizens in debating national and regional priorities in over 100 people's assemblies. A consensus emerged that every citizen must have equal rights and equal opportunities. Any discrimination based on class, religion, or gender must be abolished. Public spending on healthcare and education must be improved, which can be done by cutting back on military spending. A reform agenda emerged and was adopted as the People's Resolution. It calls for a social contract between citizens that defines the role and responsibility of the state. हमारे पास तो ऐसे ऐसे गांव हैं जिनमें लड़कियां 2-2 मील चल के जाती हैं, उनके पास स्कूल ही नहीं है पढ़ने का. हमें इस बजट का क्या फायदा? जी सर. जो पैसे है, जितना बजट है, ये तालीम और सेहत पर जो न लगाना चाहिए और कानून पर. पैसा हमारे किसानों पे खर्च किया जाए, क्योंकि ये ज़राअत होगी तो हमारा मुल्क खुशहाल होगा. तो खुद मुख्तियारी जो है सूबाई हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है उन्होंने एक कानून बनाया हुआ है कि जी हम सूबों को खुद मुख्तियार करेंगे, लेकिन फिर बात वहीं पर आकर मतलब ठहर जाती है. जब खुद मुख्तियार होगा तो यहाँ इनमें से एक भी एमपी और वजीर नहीं बनेगा. It was breathtaking to see Convention Hall, which is the biggest hall that Pakistan has, full to capacity. It was overwhelming. I dwarfed before the mighty presence of people. And probably those people were not exactly that significant in words, in their own normal lives. But when they came together, I tell you, they were a force to reckon with. ये सेहत की बात उस वक्त करे तलत भाई जब सेहत मौजूद हो, लेकिन जब सेहत को बमों से उड़ाया जाता है, जब तंडर तैयारों से उड़ाया जाता है तलत भाई, तो किस मुंह से सेहत की बात करते हैं आप? अमन चाहिए, रोजगार चाहिए, बच्चों की तालीम चाहिए, मुझे तो 2 वक्त की रोटी चाहिए. Unless you come face to face with people and you sit on the floor with them and you talk to them, those relationships remain weak. यहाँ पे छोटो कोमों को बराबरी का हकूक दे,
खुदा की कसम अगर इन कौमों को अपना हक मिलेगा तो अगर कोयटा में अगर एक पटाखा भी बजा तो मुझे यहाँ पे लटका दो। हकायक बताएं लोगों को, कौम को मुत्तहिद करे, कौम को एक जज्बा दे दो, लेकिन याद रखो यहाँ किसी की खैर नहीं होगी। जी मोहतरम, आप ऊपर आपके पास, जी बोलिए। मेरी बात यह है कि सेहत के कल्ला पानी नहीं बिजली की अल्लाह वक्त में जब बता रहे क्या करो पानी नहीं अल्लाह वक्त बाद बिजली की तरह। From this people movement, a guy came who couldn't speak the language, and he was an old person, walked up to the stage and spoke about, there was no water, there's no electricity, there's no job. So I want jobs and I want electricity and I want water. That's what he said. The great learning experience for me over there was the shattering of the assumption that we always make about the media, which is that we have the reach, that we articulate people's grievances, that we articulate their demands. Well, frankly, if we were doing it, then so many people wouldn't get together and would not have wanted to be heard. And Aman Itehad can become that platform, that parallel or even complementary platform to people's desire to be heard. हमारे सियासतदान ने अपनी अंडर 19 टीमें बना ली हैं, बाप एक में है, बेटा दूसरे में है, भतीजा तीसरी में है, भांजा चौथी में है। मुल्क को लूटे जा रहे हैं और ऐसे खा रहे हैं जैसे उनके बाप का घर है ये। जब तक इनसे पावर लेके इस आवाम को नहीं दी जाएगी तब तक हमारा मुल्क ना ये जमहूरियत इसमें आएगी ना ही इसमें दहशतगर्दी खत्म होगी। इससे हमें भी पता चल रहा है कि यूथ भी कुछ कर सकता है अमन की खातिर। इसमें हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी अमन होगा। कोई एक शख्स इस बेड़े को उठा के आगे नहीं बढ़ सकता। जो लोग पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेते, मैं समझता हूँ वो शहरी ही नहीं है। शहरी होने की पहली बुनियादी शर्त यह है कि पॉलिटिकली कॉन्शियस हो, उस पर बारे में राय दे सकता हो और उस अच्छी राय को बढ़ाने में हत्तुल मकदूर काम करे। ये एक सोशल रेवोल्यूशन की ज़रूरत है जिसमें हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। Peace means a lot of different things to a lot of different people also. There was a lot of similarity in opinions, and one might have thought that the emphasis would have been that we need a better police force, or we need a stronger army, or we need more control on these things. But the responses were more about we need better education, we need better opportunities for livelihood, we need a more equal system which is based on merit and where everyone gets the same opportunities. There's so much maligning that goes on about politicians, political parties. There was a fear that people may reject democratic governance, and that fear was completely unfounded. मसाइल का हल बंदूक और गोली में नहीं है, मुज़ाकरात में है। खाजा पॉलिसी जो है वो उसमें अमेंडमेंट होनी चाहिए। खाजा पॉलिसी को जो है वो बनाना चाहिए, वो पार्लियामेंट को हकूक़ रखते हैं तो वो नुमाइंदे होते हैं। जमहूरियत लोगों की हुकूमत, लोगों की वजह से हुकूमत, लोगों के लिए हुकूमत। जमहूरियत जो है वो आज जहाँ हम यहाँ बैठे हुए हैं ये जमहूरियत है। एक दूसरे की बात सुनना, एक दूसरे को समझना, ठीक है। चेहरे तब्दील करने से निज़ाम तब्दील नहीं होता, निज़ाम की तब्दीली चाहिए। The message and momentum of Aman Itehad has inspired hope in thousands of individuals across Pakistan. Through this platform, lawyers, traders, students, farmers, labor, businessmen, media personnel, academics, artists, and rights campaigners have found a space for a shared vision. A vision that change is possible in Pakistan, and that a life of dignity can be secured for all citizens equally. Let us make a state that cares for its people. It's a strange time in Pakistan. There is so much that one worries about. But it is the spirit, the courage of people, their commitment to peace, their resolve to continue struggling that is both inspiring and also humbling. Everyone has to come forward and do, put in their, share of that struggle. And you can't expect that, I'm going to sit at home and, things will work themselves out, because we've done that for too long. Whatever share you can put in, you have to come forward and do your bit if you want to, bring about this change. पंजवा में बालन आयो भला झूले लालन पंजवा में बालन पंजवा में बालन आयो भला झूले लालन सिंधड़ी दा सेब
बनदा सखी शाहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर दमादम मस्त कलंदर सखी शाहबाज कलंदर सखी शाहबाज कलंदर अली दम दम दे अंदर हुसैनी लाल कलंदर अली दम दम दे अंदर हुसैनी लाल कलंदर दमादम मस्त कलन बोलो दमादम मस्त कलन बोलो दमादम मस्त कलंदर